everyone, welcome back to my channel. And today the topic which I am going to discuss about the Java control statement. I was making a C language series, but in between I will upload the one session on the Java as well because I got some requests from my student. They were asking us to be continue Java side by side because I have few batches for the C and few are Java. So this today topic. I will going to record one video about that Java control statement or decision making in Java. And I want to thank you for supporting me. I will try to make more content and more powerful programming language concept here. Whatever the knowledge I'm having, I will try to do more for you so you can learn and you can apply in your lifestyle and you can able to success and you can get job as well. So thank you so much, guys. So let's start on the topic. So I have already discussion about this about if else statement that you can see in my last video, and today I'm going to discuss about that Java switch statement. And here recap, I will do some revise on this topic definition. You, if you are a student, so that these notes will be helpful for you, and if you are here to just learn, so you can skip on, you can just listen all these things. I will not take much time to be continuing the session. Okay, so if you're a student, so these definition, the making your notes will be good for you, because you will be it will give you or some statement, or it will help you to be writing your in your exam. Okay, so Java provides a statement that can control the flow of Java code. Suppose I have to write some code, so I need to given some condition. Just like I have taken one input num, and value of num is equals to 10. I'm trying to make some condition. If the condition will meet your requirement, then it will print something, and if not, then it will print something else. So those kind of flow, if I'm talking about, so Java support this control flow, and these are the different way to be doing this control flow statements in Java. One is decision making statement, second is loop statement, and third is jump statement. So I will start from the if statement that is already covered in the last session. Okay, and the in the next session I'm going to cover the switch statement. So here we will be talking about the switch statements. So if statements, I have written simple if statement, if else statement, if else, if ladder, nested if statement. Those are covered in the last session, and I have done some programming as well. Also I have written this. So if you are a BCA student, this program will be helpful for you. Sometimes it is asked for sessional and the main exam as well. Write a program to find out even or odd value in Java. Second, for the leap year, and third is a write a program to find the largest among three numbers using if else statement. So those are covered in the last video. Let's start the new topic today. So this is switch statement. So in Java, switch statement execute one statement from multiple conditions. Now you can ask, if this is also the decision making or control flow statement, so then what is the difference between if else and switch? Okay, so I'll give you the example for this. Suppose you are having three different language. Okay, so you have to check in which condition your I suppose I have given you if a less than b, then it will choose the forget it about, I will give the number. Suppose आपके पास थ्री सब्जेक्ट है और थ्री सब्जेक्ट की बुक आपकी रैक में रखा हुआ है, so you have to choose a second subject book. Okay, so you in switch case directly you give the expression true, and it will jump to the second condition, and it will print your statement. But in case of if, first it will check, okay, if it is there, okay fine, if not, then it will check again second condition. If it will find, then fine, if not, then again it will check the third condition. तो ये पूरा flow का continue करता है until it will not meet your requirement. But in switch case directly उस point पे जाएगा जो point आपने वहाँ पे दिया होगा. So this is the main difference. So basically जहाँ पे हम choice की बात करते हैं, वहाँ पे हम switch statement का use करते हैं. Suppose I make one assignment. Okay, in that assignment I have given one scientific calculator. I said, like, if you will press 1, so what are the number you have input, those will be get added, I mean addition हो जाएगा. नहीं तो सेकंड दिया तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और थर्ड दिया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फोर्थ दिया तो डिवाइड हो जाएगा. सो यू आर गिविंग सम चॉइस. तो जो चॉइस वाला पार्ट रहेगा यू कैन यूज इन स्विच केस. ओके, वो बाकी तो आपका लॉजिक है, आप लॉजिक किस तरह से बिल्ड करते हैं. तो जहाँ पे हम चॉइस की बात करते हैं मेनली, जहाँ पे हम प्रेस की प्रेस समथिंग कुछ भी ऐसा असाइनमेंट आप बना सकते हैं, सो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं. बट वेयर वी हैव टू चेक द कंडीशन.
इधर दिस वैल्यू विल इक्वल टू दिस, असाइनमेंट ऑपरेटर लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, वहां पे हम इफ एल्स का यूज करते हैं. सो सिंस जावा 7 वी कैन यूज स्ट्रिंग इन द स्विच स्टेटमेंट. यहाँ पे जावा 7 के बाद से आप कोई भी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ही नहीं, आप ये भी पास करा सकते हैं. यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ ए वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू दी है. और ये सारे नोट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं. और अगर आपको चाहिए तो आई कैन मार्क इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इन योर वर्ड फाइल और वेर एवर यू वांट टू राइट. Okay, so we will be moving into this code first. So I will be open here one file. Okay, and I will write one small definition. Okay, switch क्या होता है basically? It is allow, or you can write it allows you to execute a block of code. In simple say language you can say among many iteration or many condition और many alternatives जो आपके पास में होंगे. ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है, आपके ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं उनको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव चॉइस जिसको आप बोलते हैं, इसके लिए आपका यूज होता है. इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप यहाँ पे सिंटेक्स देख लीजिए. वैसे मैंने पीपीटी भी मेंशन कर रखा है, बट यू कैन सी हियर एज वेल. सिंटेक्स में आपको सिंपल सा सिंटेक्स होता है. आप स्विच लिखेंगे और यहाँ पे स्विच लिखने के बाद में एक्सप्रेशन देंगे जो भी आप यूज कर रहे हैं, एंड इनसाइड दिस यू विल राइट योर सम कोड. और यहाँ पे मैं अलग से बताने वाली हूँ ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू का भी, बट यहाँ पे अभी आपके लिए यही देख लीजिए. ये ब्रेक का यूज करते हैं. और आपको एक चीज यहाँ पे बोली, स्विच के अंदर हम क्या यूज करते हैं, केस का यूज करते हैं. सपोज मैंने लिखा केस 1, क्या लिखा, केस 1. ओके, इनसाइड दिस केस आई हैव गिवन सम स्टेटमेंट एंड यूज द ब्रेक, और इसको क्लोज कर दिया. फिर मैंने यहाँ पे दिया केस 2 एंड इनसाइड दिस आई हैव यूज सम कोड एंड हियर आई हैव यूज द ब्रेक. नाउ वाई वी आर यूजिंग ब्रेक हियर, एक्चुअली ये बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए केस को. सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो मेरा फर्स्ट वाले ब्लॉक में जाएगा, चेक करेगा, प्रिंट करेगा, आउटसाइड बाहर आ जाएगा. अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो नीचे वाले केस में भी चला जाएगा, बिकॉज आपने उसको स्टॉप नहीं किया, उसको वैल्यू मिल गई लेकिन वो नीचे भी चेक करेगा. और अगर आपने वहां पे ब्रेक नहीं दिया होगा देन इट विल जंप टू थर्ड केस. और अगर वहां पे थर्ड नहीं रहेगा, आपने सपोज डिफॉल्ट लिखा है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट वाला भी प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने ब्रेक नहीं यूज करा है. लास्ट में ब्रेक आपका चॉइस रहता है अगर आपको यूज करने को, वो लास्ट स्टेटमेंट है. और लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, तो वो कोड एक अच्छा कोडर कहलाता है, एक स्विच केस का बंद हो जाएगा. सो ये आपका जो होता है स्विच केस का सिंटेक्स होता है. अभी हम यूजिंग दिस सिंटेक्स आई एम गोइंग टू राइट वन प्रोग्राम. So likewise I have given the explanation about the syntax. The expression is evaluated once and compared with the value of each cases. पहली बार में जो भी दिया होगा आपने उसको हर केस में चेक करेगा, वैल्यू मिल जाती है तो उस केस में डायरेक्टली जंप कर जाएगा. ओके, एंड इफ एक्सप्रेशन मैच विद द वैल्यू, suppose value 1 whatever you have given, the code of case value 1 are executed. Similarly for the case 2 and the similarly for the case 3. If it will not find any condition whatever you have given, so suppose you have given the choice number 10 but 10 case is not there, okay, then what it will do, it will directly jump to the default case and that will be executed. So you have to remember this. The working of the switch case statement is similar to the Java if else later, okay, that I have explained in previous session. However, the syntax of the switch statement is little much easier to read and write concept. So I'm going to write one program. There I will given some number and I will try to check the size of that number if it is equal to or not. Okay, on any of the program you can write. It's very simple actually. It's not that much difficult to be use the this switch case. Okay, if you can you want to use Eclipse ID, that also we can use. I have installed Eclipse. I didn't explain yet to be get input from the user, that we will do later. अभी हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही देने वाले हैं. मैंने यहाँ पे क्लिक किया फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हमने प्रोजेक्ट बना दिया है आपका जावा का. यहाँ पे जावा न्यू, ओके, जावा न्यू करके मैंने न्यू बैच ऐसे बना देते हैं, फोल्डर बना दिया है. एंड यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट
एंड देन फिनिश। आप इसको ओपन कीजिए, एसआरसी पे जाइए। अगर आपको कोई पैकेज बनाना है, यू कैन गिव द पैकेज नेम हियर। सपोज सॉरी पैकेज नेम नॉट प्रोजेक्ट। राइट क्लिक हियर, न्यू package. I'll make one more video to install how to install the IDE and how you can use all these things. Intelligence Exchange. I have given this name to this package. Okay, finish. And the class file which I'm going to use here, this is for the switch case. So ये switch का ही है, switch test. आपको पब्लिक स्टैटिक वर्ड में चाहिए, यस, इसको चेक कर दीजिए। तो इट्स वेरी इजी, लाइक मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बना के दे देगा, सिर्फ आपको कोड लिखना है। मैंने ये क्लास का नेम लिखा है और यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। मैंने सपोज एक इनपुट दिया है, एक्सप्रेशन इसका नेम दे दिए, यू कैन यूज़ एनीथिंग। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया है, सपोज मैंने वैल्यू 3 लिया है। Okay, so this is the instance variable. Which kind of variable it is? Instance variable. I have made one video. You guys can check about that data types of variable. में ये video आपको मिल जाएगा. Instance variable. I can write this here. This is the instance variable. Okay, if you need this comment, you can let it be. Otherwise, you can remove. So here I'm going to write this code. And if I'm using the input, so that directly you can use. So here I'm not taking the input from this variable. So this will be the local variable of mine. So what I will do, I will control C, इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बिकॉज हम लोकल वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्विच लिखा, स्विच में मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आपको कौन सा एक्सप्रेशन देना है, ये आपका थर्ड नंबर केस पकड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन में क्या दिया है, केस नंबर 3 दिया है। तो जो भी वैल्यू आपकी 3 होगी उस पर ये जंप करेगा डायरेक्टली। देखो कर्ली ब्रेसेस यू कैन यूज इफ यू वांट टू यूज एंड फॉर वन स्टेटमेंट इट इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन यूज विदाउट कर्ली ब्रेसेस एज वेल, बट आई विल say like for the good practice, so you are a beginner, so you will not be confused, so you have to use the curly braces, because you have to know about whenever you are opening any curly braces you have to close that one as well. Okay, so this is the best practice only, nothing else. If you want to use you can use, otherwise अगर मैं यहाँ पे ये यूज नहीं करने वाली हूँ तो अभी ये चलेगा। आपको मैं शॉर्टकट ही बता सकती हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का, लेकिन आपको मैं ये बोलूँगी कि आप शुरू से इसको लिखिए, तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा इफ़ यू विल डू, बिकॉज व्हेन आई वाज फ्रेशर सो मुझे भी ये लिखना पड़ा था, बट दिस इज हेल्प मी टू इन माई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा कोडिंग करने में आपको हेल्प करता है। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, अगर वो पहला केस उसको मिलता है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हेलो केस 1। ओके, आई कैन डू द कॉपी पेस्ट एज वेल, बट आई विल नॉट डू, बिकॉज अदरवाइज यू गाइज विल ऑल्सो डू। ओके, सो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप केस 2 लिखिए। जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, तो अगर आप SYSO लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में वो अपना आप ही पूरा कोड प्रिंट कर देता है। तो वो मिस्टेक क्या करती है, आपके जो आपकी पावर है डिबगिंग की, वो आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। सो दैट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू आर ए डेवलपर एंड यू वांट टू बिकम ए डेवलपर, बिकॉज आपकी कोडिंग स्किल अच्छी हो ना हो, लेकिन डिबगिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट इज द मेन एडवांटेज एक्चुअली। सो इफ़ यू आर अ डेवलपर योर कोडिंग स्किल्स शुड बी गुड। If it is, so you can write any program, any software you can make, any website you can make. I mean, you can write any logic, okay, and you can crack and you can easily do the coding. Debugging skill is mandatory if you are having, so you will not face any issue, I believe. Okay, as per my experience, if you able to write the code but you cannot debug, so all are useless. Okay, so you should know that how to debug the code. When I will do the tutorial for after Java, I will do some tutorial for Selenium, Cypress, and Playwright, or Python, or R language or machine learning language. So then you will come to know. But here I have started all the tutorial from the very basic, because to deep diving into the automation things, or
some development things, you have to know the basic knowledge about the C and Java. That's why I decide to make the tutorial first on the basic language, okay, because this is the priority to be understand all the code, okay. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रॉन्ग चॉइस। मुझे एक एक्सप्रेशन में ये गलत आ रहा है, ये हम देखते हैं मुझे क्यों गलत आ रहा है। बोल रहे हैं कि आपका कोड रीचेबल नहीं है। डिफॉल्ट मैंने जो यूज करा है यहाँ पे, ओके, DEFA, मैंने स्पेलिंग गलत करा है, DEFAULT, ये स्पेलिंग होता है डिफॉल्ट का, वो हमने इस पे स्पेलिंग गलत लिख दिया था, इस वजह से मुझे वो इस तरीके से दिखा रहा था, ओके। Sorry, my battery is also running, laptop battery, okay. Allow me a second, okay. So this is done, okay. So you will write here run as Java application. So hello case 3, because you have written 3 here. If I will do 2, so what will happen? Control S, you will run and right click Java application, it will do the case 2. If you will write 10 case is not there, so what it will print? It will going to print your wrong choice, means default one. This is the first program for switch. So how switch case work? Okay, so we will be moving into the next code. Until you can check, if you are having any doubt, you can ask. We'll move to the PPT. Few are the important point here, so that you can note it down. Okay, so here you have to be remember few things. This is the syntax, and write a program to find out the month using switch case statement. That is your work from home. You can do this. This is for your I have given this assignment to you. If you are able to do that is fine. If not, then I will try to make you understand, okay. Before moving to looping concept, just I will mark you to some point for the switch case statement. That is, if Java statement because only work with the primitive data types, that is our byte, short, character and integer. Okay, I will make a note for you here. In note you can mark for the switch case statement. Actually Java, you can write here Java switch statements only work with, फर्स्ट आपका होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मैंने आपको अंतर बताया है, रैपर क्लासेस के कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि आपका बाइट होता है, आपका शॉर्ट आप यूज़ करते हैं, आप इंटीजर वैल्यू यूज़ करते हैं और आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं, इसके केस में यूज़ होता है। सेकंड आपके इसमें एनुमरेटेड भी डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमेटेड डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग क्लास यूज़ कर सकते हैं आप, और रैपर क्लास यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। रैपर क्लास जैसे कि रैपर क्लास तो आपको बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन और फ्रेशर, डजंट मैटर, दे आर गोइंग टू आस्क यू रैपर क्लास मतलब इंटीजर की रैपर क्लास क्या होती है, इंटीजर होती है, और कैरेक्टर की रैपर क्लास क्या होती है, कैरेक्टर होती है, और आपका शॉर्ट की शॉर्ट होती है। बस ये आपको क्लास का नेम लिखना पड़ता है, ये डेटा टाइप्स नहीं है, ये क्लासेस हैं आपकी। यहाँ पे आप इस तरह से इसको डिफाइन करने वाले हैं, बिकॉज अगर आपको कन्वर्ट भी करना है तो यूजिंग हम रैपर क्लासेस को यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रैपर क्लासेस जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास कहलाती है, ठीक है। तो ये सारा होता है। और अभी आप पूछते हैं कि ये एनुमरेटेड टाइप्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको
बताया तो ठीक है, नहीं तो मैं एनएम वाले केस में बताऊंगी। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब जहाँ पे हम एनएम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने मेरे एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में मैंने ये सब चीज़ें यूज़ करा हुआ है। और मैंने मतलब मेरे प्रोजेक्ट में क्या था, मुझे एनएम यूज़ करना था। एनएम कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली, जहाँ पे मुझे एक कीवर्ड यूज़ करना है, कि मुझे उसकी वैल्यू सेट करनी है वहाँ पे, तो हम उसके लिए एनएम यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली द टाइप एज ए फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा कि मेरा एक कीवर्ड है रिफ्रेश, सपोज मुझे वो हर बार यूज़ करना है, तो हम उनको एक सेट कर देते हैं जावा के अंदर एनएम में। तो मैंने सपोज यहाँ पे ये मीडियम लार्ज ये कुछ सेलेक्ट किया, तो मेरे मैं जब भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगी, तो मैं सिर्फ साइज का यूज़ करने वाले हैं। तो साइज में ऑलरेडी मेरे पास ये एनएम की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली एनएम क्या होता है, दैट हैज़ ए फिक्स सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, यू कैन राइट से। So forget about it. Once we will be moving in this concept, then I will explain you. Okay, so for now just remember these things कि ये Java switch case के बारे में statement है, because it's only work with the primitive। ये interview question है, so you have to be remember these things. If you know, that is good, very actually. If not, then you have to be check and you have to be remember. I will not say like if not then it's good, but you have to be know about this. And because if you are a tester or developer, doesn't matter, these are the basic concept they are going to definitely ask you. Also sometimes interviewer also don't know. I used to take interview for the interview for the experienced people, and I used to ask those kind of questions. They are not able to give the answer. If you will give some assignment also, they will be able to do, but if you will ask about the basic concept, sometimes they don't know. They say only we need to revise. Yeah, they need to revise, but if your basis is strong, then you are capable enough to be clear all the rounds. Okay, so in next in separate video, actually I will make you how you can prepare for the interview as well, if you guys need it. But if you are a student, just focus all these things. Okay, so the next concept in PPT, you can say I have mentioned the loop. So we will be moving the next concept in loop in Java. Basically, looping in Java is a feature which facilitates the execution of a set of instruction or function repeatedly while some condition evaluated to true. Suppose in I'm moving into that one notepad file, I have already here. So I need to print 1 to 10. 1 to 10, not 1 to 10, means 101, from 1 to 10 I need to print all the numbers in between 1 to 10. Okay, so you can use the cfs also, switch case also, but your program will be big. Actually the way you are writing your program, they will use the number of lines, but always you have to write the short code actually, so that the repeated thing is coming, the loop concept is coming. Okay, suppose I said okay, do one thing, you are writing hello program, but this hello program message I want to print on my console window 100 of times. So you are not going to write the 100 lines of code. Okay, so there you will be using the Java concept. So that's why we said ki loops are basically used to repeat a block of code. Okay, for example, if you want to show some message 100 times, that I have given the example, so rather than writing the 100 lines, you will write, you will use this loop concept. Okay, and in Java we are having the four type of loop. If you will see three types here, but one is also there for each loop, that mostly used for the iteration. Don't worry, I will explain it later. Just focus it for as of this only. Java provide three ways of executing loop. One is while loop, second is a do while loop, and third is a for loop. Basically while loop is, we used to call this loop as an entry control loop, because what will be happen, you have to write the condition after initialization. You have to check the condition before moving into this inside into the loop. So that's why we call the entry control loop. Okay, this loop is very famous, but most of the time when you are industry, you used to write the for loop. But when we are students, so we think while and do while loop is very easy to be writing the code, because I was also thinking the same when I was a student. But right now in an organization, when I'm trying to write any code, so I'm not using this loop at all. I'm using mostly the for loop. But you have to understand all the loop concept here, so that is very easy. And looping everywhere, you will be writing anything, so you are going to use, even you are using the collection of things. In Java, there is a one more important concept in collection. After the lots of time is there actually to be explaining that. I'm very much excited to be explaining about the industry work, that I will do it later as well. So basically you have to understand this topic. If you know about this is very good choice to be learn actually. If no, then you have to you have to be focus on this topic.
सो वाइल लूप में क्या होता है, वी यूज टू कॉल दिस लूप एज अ एंट्री कंट्रोल लूप. दिस लूप अलाउ कोड टू बी executed repeatedly based on a given boolean condition. Boolean condition, why we are saying you have to write some condition. Suppose I have written a less than equals to 10, so this is the condition here you are writing. So if the condition will met your requirement, I mean this condition will be true, then it will move into the inside the loop, otherwise it will exit that particular loop. So the syntax which I have mentioned here, initialization while, then you are writing some condition, and inside this increment and decrement. Increment decrement means you want to print on the increment order or decrement, sorry, decrement order. So that's why we are using this concept. So let's move into one example. We are not wasting any time. Just I want to syntax. I think syntax का spelling ax होता है, you guys can do by your way. Okay, so don't worry. So यहाँ पे इसको हम explain करते हैं. The basically the initial expression, जो initialization आप जिसको बोलते हैं, और declare variable, ये execute only once whatever you have given the initialization outside the loop. The condition is evaluated. If the condition is true, the body of the loop is executed. Okay, and the update expression update the value of initial expression. मतलब आपने increment किया, decrement किया accordingly. Then the condition is evaluated again. The process continues until the condition is false. जो भी आपने यहाँ पे condition दिया है, ये आपका एक छोटा सा process है जो मैंने अभी आपको इसके बारे में explain किया है. And I'm going to write one program here. You can see where is my ID. This is my ID. I'm going to write another program here. First, I will try to write a program for while loop. Okay, so I have given while loop program. And what you need to do, suppose I have written while loop only. Okay, that's fine. Okay, public static main I didn't check, so that's why it's not coming. तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ता है. ये public static void main मैंने पूरा आपको explain किया. Please go through the video and check. String args I have written this one. Okay, and inside this I'm going to write one variable. Suppose integer input I have taken, input variable I have taken here. Okay, and I have taken one value. Okay, we'll do this inside the loop also. You can declare, but I have declared the integer I. Okay, input is a value which I have given less than 10. Sorry, equals to 10, and I is a loop I'm using here. So what I will do, forget it about it. Okay, I'm not taking any input here. Okay, just let it be. You will not be confused. So here मैंने एक वेरिएबल यूज करा है जिसमें मैंने यहाँ पे इंटीजर आई लिया. मैंने इसको इनिशियलाइज करा. आई इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, 1 लिखा. ये क्या हो गया आपका, इनिशियल होगी आपकी वैल्यू, इनिशियलाइज होगी. ये आपकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज होगी. यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया. ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप लिखते हैं. लूप में मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आपका आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है. ये जो कंडीशन है लेस देन, सॉरी ये लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू 10. यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया. ये चेक करेगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा. किसको प्रिंट करेगा, आपका आई को प्रिंट करेगा. लाइन का मतलब होता है न्यू लाइन में वो प्रिंट करेगा. और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 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 कर देंगे. हम सिंपल तरीके से यूज करते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम है. इसे आप क्या, ये यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन आप सिंटेक्स जाके चेक कर सकते हैं. ये आपका कंडीशन हो गया और ये आपका इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हो गया. ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, और ये हमने किस के लिए यूज करा, डिस्प्ले के लिए. कमेंट भी शायद मैंने एक्सप्लेन किया नहीं किया तो मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगी. डिस्प्ले, PLAY. ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया इस वैल्यू को, और अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे. लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कोड को. मैंने आई की वैल्यू कितना लिखा है, 1. वो चेक करेगा कि 1 लेस देन मतलब छोटा या फिर इक्वल है 10 के. इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो वो लूप के अंदर आएगा. कंडीशन ट्रू हो गई है तो 1 प्रिंट कर देगा. फिर अभी आई की वैल्यू में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अभी दोबारा से जाएगा, ये फिक्स रहेगा. ओनली एग्जीक्यूट वंस इनिशियल वैल्यू, तो वहां पे आपको चेक ही नहीं करना है. आपको अब जो कॉन्सेप्ट रन कराना है अपना इतने में रन कराना है. ओके, इस चीज का बहुत ध्यान रखना. बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सो मैं भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते थे. सो दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले इनिशियल वैल्यू जो होती है, वो कोड जो आपका इनिशियल होता है वो एक ही बार रन होता है. लेकिन उसके बाद में जो आपकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है उससे आपकी कंडीशन चेक होती है. सेकेंड लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स आई की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया. 2 10 से छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, तो वो 2 को प्रिंट करेगा. सो इट विल एग्जीक्यूट अंटिल इट विल नॉट फाइंड आउट 10. सपोज अभी आई की वैल्यू 10 हो गया, तो 10 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, 10 प्रिंट करेगा. फिर अभी 10 + 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा. तो 11 पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी. 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल है. इन दैट केस वो बाहर आ जाएगा और अपने कुछ भी नहीं लिखा है, प्रिंट करेगा आपका 1 to 10. आप रन पे क्लिक कीजिए, रन एज एप्लीकेशन कीजिए. जावा एप्लीकेशन पे हमने क्लिक कर दिया.
तो अभी हम इसको ओके कर देते, सेव नहीं था कोड इसलिए पूछ रहा था। अभी आप कंसोल विंडो पर जाइए, थोड़ा इसको अप कर देते हैं विंडो को। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे सपोज 15 रख दिया, तो वो कहाँ तक चेक करेगा, 15 तक चेक करेगा। कहाँ तक चेक करने वाला है आपकी वैल्यू को, 15 तक चेक करने वाला है और 15 प्रिंट करने वाला है। और अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे आपकी वैल्यू को 20 कर दिया और हमें ये टू का टेबल भी बन जाएगा। और मैंने आपको बोला कि हर बार वो +1 की जगह 2 का इंक्रीमेंट करेगा। तो पहली बार क्या प्रिंट करने वाला है, 1 < 10। तो हम 1 की जगह इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम 2 का टेबल बना रहे हैं ना। इसी कोड में समझा रही हूँ मैं आपको कोड को, डोंट बी कंफ्यूज, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, 2 20 से छोटा है तो 2 प्रिंट करेगा। फिर 2 में 2 प्लस कर देगा, 4, 4 20 से छोटा है तो 4 प्रिंट करेगा। फिर 4 + 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 का पूरा टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप रन एज पे क्लिक करेंगे, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 दैट इज द टेबल ऑफ 2। ओके, ये प्रिंट हो गया आपका, है ना। तो ये आपका व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एक नया प्रोग्राम बनाती हूँ इसी तरह का, जिसमें हम डू व्हाइल लूप का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया डू व्हाइल लूप, ये आपका फाइल का नेम है। ओके, आई डिडंट चेक द पब्लिक स्टैटिक void main, so I need to write. I'm telling you again, guys, if you are a if you are a student, so this is very good for you to be practice of your program, because don't be use predefined things like you will type tab, and because it will help you to be understand the debugging skills. एरर आना प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज अगर एरर नहीं आएगी तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। मुझसे भी एरर होती है, मैं अपनी वीडियो को क्रॉप करके एडिटिंग नहीं करती हूँ, जैसे डायरेक्टली आपको टेच करती हूँ वैसे ही मैं डायरेक्टली अपलोड कर देती हूँ। तो डजेंट मैटर, एवरीवन डू द मिस्टेक्स, सो वी ऑलरेडी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ओनली। सो आई डोंट हेजिटेट अबाउट टू से लाइक इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, ओके यस आई एडमिट दैट, and I will try to always focus to be provide the solution to you guys. Okay, so अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे यूज करने डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप में मुझे एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैंने वो स्टेटमेंट ना 10 बार प्रिंट कराना है। मुझे हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है यूजिंग डू वाइल लूप। तो सेम आपने यहाँ पे इंटीजर आई लिया है, और ये आपका एक वेरिएबल है, और यहाँ पे आपने i = 1 प्रिंट कराया है इसमें, सॉरी इनिशियलाइज कराया है। तो ये आपका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया है वैल्यू का, ये इनिशियलाइजेशन है। और यहाँ पे डू आ जाएगा, इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। आप ऐसे समझिए जैसे आपको किसी थिएटर में जाना है, तो जाते वक्त कोई एंट्री आपकी उन्होंने चेकिंग नहीं की, लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो दे विल चेक योर टिकट। ओके, समटाइम्स इट्स हैपन। ओके, जहाँ पे आपको एंट्री के टाइम नहीं बोलते, लेकिन जाते टाइम आपको चेक करते, तो एंट्री हो जाएगा आपको। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू, डजंट मैटर, वो पहली बार आपका चलेगा ही चलेगा कोड। तो पहली बार आपको प्रिंट कराना ही है, बिकॉज जो कंडीशन चेक होती है डुबाइल में वो लास्ट में चेक होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया i <10 वो सेम कोड है बट नया फाइल बनाया यहाँ पे मैंने, और ये सेमीकोलन एग्जिट कंट्रोल है, तो डेफिनेटली आपको सेमीकोलन आएगा, उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहली बार जो भी आप लिखने वाले हैं वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आई प्रिंट करा। तो पहली बार में अगर मैं इसको सपोज 50 भी कर देती हूँ यहाँ पे, तो पहली बार आप चेक करेंगे ना कोड में, तो 50 < 10 मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर मैं इस कोड को रन कराने जाऊँ ना, यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन पे, सो इफ आई विल एग्जीक्यूट दिस कोड, सो आई विल गेट द कंडीशन 1। You will say, okay, ma'am, condition is not true. Yeah, this is not true. But first time it will not check the condition. After first time you have written this do, and it will it will come inside the block, and it will print whatever the I value you have initialized. Okay, so that is the reason we said do while loop is the exit control loop. Okay, you have to be remember this. And people do some mistakes when they are writing the do while loop. You have to write the semicolon. It's mandatory actually. If you are not using, sometimes it give you the error. सो आपको क्या करना है, इसको रन कराना है। कोड मेरा रन हो जाएगा फिर रन जावा एप्लीकेशन, तो मेरा यहाँ पे 1 1 ये ओके। ओके फाइन, इफ इट इज कमिंग, आई डिड वन मिस्टेक हियर, आई डिडंट गिवन एनी स्टेटमेंट हियर इंक्रीमेंट, सो वो 1 पे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। देखो कंपाइलर क्या है, ये मुझे फोर्सफुली यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। ये आपका कोड जो है यहाँ पे मुझे इसको एग्जिट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, मेरे को बार बार ये विंडो पे चलता चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले, i = i+1, मतलब वो इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि आपने उसको कंडीशन नहीं दिया ना, तो वो इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है कोड आपका। अभी मैंने रन करा लिया यहाँ पे, तो मुझे ये फोर्सफुली एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ से आप स्टॉप कर दीजिए।
टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको। और इसको हमने क्लियर कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से रन कराया, रन जावा, ओके, राइट क्लिक, Java application 1 to 10. Okay, and I said I need to print what I need to print. Hello, intelligence exchange. Now it will print 10 times this message on your console window. Cool. So this is about the do while loop. Now next I'm moving into the for loop, and for is a very easy loop. I will check this time, public static void main. Okay, and यहाँ पे आप जाएंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है कि आपको इनिशियल वैल्यू आप साथ में लिख सकते हैं। ओके, मैंने ये इनिशियल वैल्यू दे दिया है, सॉरी, इंट स्पेस, एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर भी असाइन करा सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। और कंडीशन भी इसमें हम साथ में देते हैं। और यहाँ पे इंक्रीमेंट को i+1, i++ भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने i को प्रिंट करा दिया है, एंड दैट्स इट। I will right click here, run as, once again run as and Java application. Cool. So this is the for loop. Okay, we'll move into the PPT. You can check here. This is the do while loop. Basically, do while loop is similar to while loop, with only difference that is check for condition after executing the statement. This is what I have explained to you. That's why we call this loop as a exit control loop. If you are a student, please make a note and write it down in your exam. You no need to write much about this. If you will give in one example, one program, and this definition, that is more than enough. And the question about that looping concept, you will get 5 marks or 10 marks question. Definitely, if you are a BSc student, write it down. Definitely, you are going to get this question in your exam. Note, the Java do while loop is used to iterate a part of the program several times. Use it if the number of iteration is not fixed, and you must have to execute the loop at least once. Okay, like I have given you the example, if you have written 50 less than equals to 10, the condition was not true, but at least it print once your output. This was the note which I have explained to you. Okay, and now for loop, the Java for loop is used to iterate a part of the program several times. If the number of iteration is fixed, then it is recommended to use for loop. Not for loop, that is for loop. Okay, that is the right typing mistake. Okay, this is all about today, and I hope you like my session, and try to be focused on your programming skills. If you are having any question, please write down and comment. I will try to give you all the answers. I will try to clear all your doubts. Thank you so much for watching. In next session, I will give some more example about the looping concept only. Thanks.